Now, ionic bonding, the type of bond which is formed by the complete transfer of electrons from one atom to another due to oppositely charged ions are formed, which are held together by electrostatic forces of attraction resulting in ionic bond. जैसे कि NaCl है, we discussed yesterday that group 1 metals can form ionic compounds with group 7 atoms. क्यों? Group 1 have a valency of +1 and they have one outermost electron which they can donate to the group 7 atoms because group 7 atoms, the halogens, need one electron and they all have a -1 charge. Or sodium के ऊपर आ जाएगा +1 charge and together they'll form a ionic compound known as NaCl. In between they have which forces of attractions? Oppositely charged atoms के दरमियान जो होती हैं प्लस और नेगेटिव के दरमियान ionic bonds. Here you have the complete diagram. Now this is the important part जो आपने पेपर के अंदर शो करना है. This is the thing that you have to show in the paper. इसके marks मिलते हैं. This is usually of 3 marks. How are you going to show this? Remember one thing. Always show the new formation. आपने क्या करना है? You don't have to tell this one and this one both. आपने क्या करना है? You have to tell the new formation after solving it कि आपके पास end में क्या आएगा, एक ही दफा product जो बनेगा. तो वो क्या है? This was the old फॉर्मेशन. ठीक है, आपने न्यू बतानी है. न्यू में क्या है कि जो सोडियम इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस, क्लोरीन इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट. अब आपने शो करना है कि जो क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन था दैट हैज एक्चुअली कम फ्रॉम सोडियम एंड दैट इज व्हाई क्लोरीन हैज अ -1 चार्ज, सोडियम हैज अ +1 चार्ज. ये ब्रैकेट्स लगाने हैं and then we have sodium chloride. Same is the case of the other example that we talked about was magnesium oxide +2 and -2. एक और एग्जांपल है MgCl2. अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? मैं कहता हूँ Mg है, इसका चार्ज है +2 बिकॉज इट्स इन ग्रुप नंबर 2 और Cl है, इसका चार्ज है -1. ना ऑब्वियसली मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है अभी? 1 एंड 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, एक तो चला जाएगा इस क्लोरीन के पास, इट हैज अ -1 चार्ज. ये दूसरा कहाँ जाएगा? वी विल नीड अनदर क्लोरीन, वी वांट अनदर क्लोरीन. अब आपके पास एक मैग्नीशियम है, दिस गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, और आपके पास दो क्लोरीन्स हो गए. वन क्लोरीन आल्सो गेट्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड द अदर क्लोरीन आल्सो गेट्स 1 इलेक्ट्रॉन. तो आपके पास अब जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा MgCl2. एंड आल्सो आई टॉट यू यस्टरडे दैट हाउ डू वी फॉर्म द फार्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स. अगर मैग्नीशियम का चार्ज +2 है और क्लोरीन का चार्ज -1 है, इस 2 को इधर ले आए और इस 1 को इधर ले जाएं तो क्या बन जाएगा आपके पास? MgCl2. दिस इज हाउ यू विल बी डिस्प्लेइंग द फॉर्मेशन. या एक दूसरा तरीका ये होता है दैट इफ यू डोंट वांट टू ड्रॉ 2Cl, आप इसको इरेज करें and you can add a 2 over here that this 2 is being multiplied by this bracket कि ये दो क्लोरीन है आपके पास टोटल. So both the ways are actually acceptable.